Welcome to episode 76. 77. 77, nice. 77. Episode 77. 4x7 हो जाएगा तो 77721 हो जाएगा. Happy all time high, guys. Yes. Bitcoin touched $125,800 yesterday. So market के 2.5 trillion के ऊपर गया, almost थोड़ा बहुत 2.49 2.5 trillion के ऊपर. करंट प्राइस थोड़ा डाउन है, ऑल टाइम हाई से 1.5%, $123,640. मार्केट के बीच $2.46 trillion. अनदर चीज, गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई $3,950 ना, $3,950. सो आई गेस ये शुरुआत है. मुझे प्राइस वाइज लग रहा है कि अगले 4 5 6 7 दिन में तक शायद थोड़ा पुल बैक आ सकता है. So I think it will be a good opportunity to again stack some sets. Maybe 3 to 5% dip आ सकता है, 3 to 5, maximum 5-6%. But ठीक है, तो भी you can start stacking and stack sets. Yeah, yesterday INR I price think 5th October 1.4. was the all-time high INR terms में. Premium percent 3% चल रहा है. And the Indian rupee अगर आप compare करोगे तो it had crossed 1 crore 14 lakhs yesterday. तो yesterday से 1.47% down है वैसे, but that's it's Saturday Sunday Monday का price. Saturday Sunday is usually वो CME gap के चलते थोड़ा बहुत price fluctuate होता है. So today again US markets will open शाम में 7 बजे, and then we see on how the response is. Japan की भी नई PM उनका भी I think first day है और she is about to be तो बहुत लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं. तो वहाँ के भी अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे तो इट्स एट एन ऑल टाइम हाई. येस्टरडे आज सुबह फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड मेटा प्लैनेट भी अपर सर्किट टच किया था, बट देन इट पुल्ड बैक फॉर अ व्हाइल. तो all of this is an indicator that the global currencies, especially the US dollar, is failing, and hard assets are making a very violent comeback. Hard assets, especially Bitcoin and gold. Silver तो खैर है ही, but it's coming and going, and उसके it's more, sometimes it feels कि silver is more volatile than Bitcoin because it has a mind of its own. Industries में use होता है, and that is why a lot of people have been pitching gold and silver as of now. But yeah, we on this channel mainly talk about gold and Bitcoin. Silver is a second best cousin of gold, so इसलिए it will be brought up in discussions now and then. But yeah, if you are measuring Bitcoin priced in silver, so 72 kilos of silver will buy you 1 Bitcoin, and almost 1 kilo of gold will buy you 1 Bitcoin in today's terms. And जापान का जैसा आपने बताया, जापान का स्टॉक मार्केट निफ्टी इज एट 5% हाई. पीएम का फर्स्ट डे है. दूसरा, फ्रांस से न्यूज आ रही है कि जस्ट लास्ट मंथ 7 या 8 अक्टूबर को फ्रांस गवर्नमेंट कलेक्ट हुई थी, न्यू पीएम आया था. आज उसने भी रिजाइन कर दिया, लेस देन अ मंथ. तो वही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है, एंड इसमें बेस्ट एसेट टू होल्ड इज बिटकॉइन ऑलवेज. Less than 3 years. Nice. आपका म्यूट है आपका म्यूट. Sorry. So last 3 years में 16,000 से it's crossed all time high, so it's become 125,000 और 123 के बीच में झूल रहा है. So this all happened in the last 3 years. This is direct effect of the ATHs, the corporations getting involved, countries getting involved, and all of them thinking that safety होनी चाहिए. That is why they are placing their bets on Bitcoin as well. I'm not talking about cryptos because उसमें भी बहुत सारा कचरा है, and there's a lot of yesterday we'll cover that later in the channel. Morgan Stanley ने भी उनके personal financial advisors को ये बोला है कि you can go and pitch for cryptocurrencies in your portfolios, in the people who want to have that exposure. So yeah, the world is slowly waking up to what Bitcoiners have been telling for years now. So yeah,
it's good for everyone in the system, unless they are hell bent on denying the existence of Bitcoin and बोल रहे हैं कि नहीं, how can it be, because मैं अभी भी comments देखता हूँ on LinkedIn where people are parroting the same. Bitcoin has no underlying litigation. अभी भी ना? Yeah. Yesterday I think one of I think आयुष ने किसी equity investor के comment किया था उनके post पे, तो उसको comment मिला कि I don't see value in Bitcoin and क्या कहते हैं, I don't see any portfolio allocation in that is necessary. इससे अच्छा आप alternative investments में कर लो या तो real estate में कर लो. So these were the exact words. And that fellow जो भी है, he's a chartered financial analyst. So I don't know what kind of advice he's giving to his clients, despite being it's one of the best performing, the best performing assets, and the nearest competitor is gold. And वो भी second आ रहा है if you zoom out and take a 10-year time frame or 5-year time frame also. तो yeah, इस साल में Bitcoin is up ना, gold is more up than Bitcoin अभी तक, year to date. हाँ, अगर आप एक साल का देखेंगे तो 100% क्रॉस हो चुका है. year to date में Bitcoin is second, but yeah अभी 3 month है, and अभी वो एक वीक में सारा Bitcoin can cover the gap. एक वीक भी नहीं चाहिए इनको. True. जैसे अगर आप देख रहे हो लास्ट वीक से इस हफ्ते 108 के लोज से we've reached 125, so it all happened in 1 week. So इससे फर्दर रन अप कितना हो सकता है एंड कितना फ्रॉथी हो सकता है ऑन द टॉप प्लेयर्स, विल सी, देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट फ्यू weeks, because this is the fourth quarter of the year and that is a very in the past also we've seen violent moves upside and downside, तो बहुत सारे स्विंग्स देखने को मिलेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. एक चीज ध्यान रखने की है अगेन बिटकॉइन में कि ये जो फोर्थ साइकिल है, सो पहली 3 साइकिल में बॉटम के 1060 एवरेज डेज के बाद बिटकॉइन का टॉप फॉर्म होता है. सो वो टाइम आ रहा है 20 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में. तो एक वो भी सब लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन टॉप बनाएगा. सो लास्ट 3 साइकिल में 2 साइकिल में ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली 1064 डेज के बाद बॉटम टू टॉप बनाए, और एक बार 1040 डेज लगा था. तो एवरेज अगर 1060 समथिंग देखो आप, तो दैट इज कमिंग अराउंड 20 अक्टूबर टू 5 नवंबर. सो देखते हैं उसमें क्या होता है. आई डोंट थिंक बिटकॉइन विल फॉर्म अ टॉप. सरप्राइज करेगा इस बार, ऐसा लग रहा है मुझे. विल सी. ठीक है, परमा बुलिश हो आप तो, देखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बिटप्लेब समिट इज अराउंड द कॉर्नर. इस महीने के एंड में होगा and you can check out their website. The main conference, I mean the main summit is on 1st November. उससे पहले आपको 2 दिन मिलेंगे. 29 से start होता है, 29, 30, 31, and you have other activities as well. I'll be speaking at the event as well, and बाकी सारे काफ़ी well known speakers हैं in the Indian circle and बाहर से भी लोग आ रहे हैं to talk about Bitcoin. माइक पीटरसन, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था इनके बारे में, ही इज बिटकॉइन बीच के डायरेक्टर हैं. दुसान इज द फाउंडर ऑफ एमटीएच. ऊनोकॉइन के को फाउंडर हरीश भी होंगे. संतोष हैं, ही इज फाउंडर स्टूडेंट ऑफ बिटकॉइन, and you have a lot of people as well. So there'll be a lot of workshops, a lot of seminars. This is fun to do, fun to watch. So if you can make it, it'll be great, and you'll find a lot of like-minded people. One thing is important कि if anyone is building something on Bitcoin and Nostr or any other open source protocol and they want to be a part of a pitch contest, this is a opportunity for anyone who would like to participate. It's happening, इनका form है, you can click on this particular link and आपको ले जाया जाएगा, and then you can fill in the details वगैरह वगैरह. It's a good way to focus on what you want to build, what is your idea, and then depending on that, if you get selected, the first prize is $1,000 and the second runner-up gets $500.
So yeah, it's a interesting opportunity. Do check it out, and if you want to share it amongst those who are important and building on Bitcoin, तो उनको forward कर दीजिएगा. Nice. In other news, there are things happening in India. Their FIU compliance is a very strong thing, and यहाँ पे India में a lot of exchanges have already complied, but FIU ने एक पूरी list निकाली है कि a lot of banned exchanges जिन्होंने comply नहीं किया था. So these are the 25 exchanges which were not compliant with the regulations in India. एंड जिसके भी जो भी कॉइन्स इस पे हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दे विल ब्लॉक द वेबसाइट्स एंड द एप्लीकेशंस. सो जो भी है, either move it to another centralized exchange, or better yet take self custody of it if allowed to do so. But yeah, this is important information जो बहुत सारे लोग skip कर जाते हैं, because उनको लगता है कि हाँ ठीक है, खरीद के रख लिया एंड अभी कुछ नहीं होने वाला है उसको. That's not the case, especially in the terms of centralized exchanges. So this is important. Moving ahead, Right. this week there was one major shocker. जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारामन जी, she has openly been critical of cryptocurrencies in general and any other thing related to currencies. I mean cryptocurrencies, Bitcoin included. But stablecoin का इतना जो प्रचार हो रहा है in US and other countries, and every country wants to establish their own stablecoin. And we've talked about enough about stablecoins in the past episodes. We won't get into the specifics of it. But going forward, every company, every country can make their own stablecoins. And that is why she has come out with a statement saying that nations must prepare to deal with stablecoins. And इसमें again you will see a lot of form, like क्या बोलते हैं, regulations and laws being formed around stable coins in India, and it will come in some form. कैसे आएगा, कब आएगा नहीं पता, but this is a thing that cannot be ignored by any country, and India thankfully has the same opinion. But सिद्धार्थ जो हैं, he is the Jetking के CFO. इनका setback हुआ था last week. If you go to his profile, you can find out what that setback is about. Basically, their preferential shares got shot down by BSE, and they're not able to issue equity and raise money from it to buy Bitcoin. The same model which happens इसमें, like through MicroStrategy or a MetaPlanet वगैरह वगैरह दूसरे countries में जो हो रहा है, that unfortunately cannot be replicated at this point with Jetking. But what they can do is from their operational cash flows, they can purchase Bitcoin. And अगर आप jetking.org/dashboard जा करके देखोगे, every alternate day, they are purchasing some amount of Bitcoin. It might be small, but as far as I know, they are the only company doing that in India. So they do have a first mover advantage anyway. And he's pointed out that nations must prepare to deal with Bitcoin as well. So stable coins cannot be isolated and kept, and ये नहीं बोल सकते कि नहीं यही सही है and Bitcoin and everything else is wrong. Ultimately, Bitcoin stable coins will be backed by Bitcoin, and we'll see that happen in the next few years. And why I'm saying this, it's because it's not just me saying this. Global financial experts and other जो भी दिग्गज हैं in the space, they have been considering it now, giving the badge of approval कि ठीक है, now all of this is good, all of this is hunky dory. तो CNBC की रिपोर्टिंग के हिसाब से JP Morgan analysts are calling it a debasement trade, gold and Bitcoin specifically in दोनों को. So basically, whenever a country is there are concerns about the debt debasement because of high government deficits and the printing of money वगैरह वगैरह, they turn to gold, and now people are starting to save in Bitcoin as well. So that's coming from JP Morgan analysts. JP Morgan was a very harsh critic of Bitcoin 5-6 साल पहले, but now he and his company have done a U-turn. तो सब कोई यही करेंगे. Eventually they will pivot and opt for Bitcoin. Right. Debasement बहुत मस्त नाम है. कौन सा?
debasement trade, gold and debasement rate. Bitcoin. Yeah. Hmm. And हाँ यार, नेशन मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन्स. थोड़ा सा अभी वही बात है, दे आर नॉट ओपनली टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन. स्टेबल कॉइन्स क्यों है? बिकॉज बिटकॉइन है, तभी स्टेबल कॉइन आया ना, वरना स्टेबल कॉइन की जरूरत भी नहीं थी. फाइनली इट विल ऑल मूव इनटू बिटकॉइन. सो आगे टाइम ये भी आएगा कि उनको बोलना पड़ेगा कि नाउ इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर बिटकॉइन. शायद वो टाइम भी आएगा. No, I don't think आई डोंट. ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है. Nobody is going to tell because ये लोग वही बोलेंगे ना कि नहीं sovereign currency ही opt करो and opt for stable coins. And stable coins maybe it will only be restricted as at least in India and the things are progressing. It will only be restricted to anything which is government backed because अगर आप US में देखोगे there are companies like Stripe, there are Stripe, all of these. Tether तो है ही. Tether has made a USAT, which is another local stable coin. So वहाँ पे independent corporations को भी मिल रहा है मौका to make their own stable coins. So then market will decide कि कौन सा stable coin कौन से use के लिए. But all of it will be pegged to obviously the US dollar. तो यहाँ पे भी ideally ऐसा होना चाहिए कि every corporation can make their own stable coin. But obviously you can tie it up with the regulations and it should be one is to one pegged with INR. But ultimately I feel that that exercise is futile and over the years it will be backed by Bitcoin or some kind of reserves will be formed. Bitcoin and gold. एक बार लोग स्टेबल कॉइन यूज करना सीख जाएंगे, फिर बिटकॉइन इजी हो जाएगा उनके लिए ना. प्राइवेट की वॉलेट्स ये Yeah. सब उनके लिए काफी इजी रहेगा. But that's the thing ना, So वही अगर ऐसे जर्नी है. टॉप डाउन इशू हो देन ये प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट लाएंगे भी या नहीं, नहीं पता. बोल देंगे कि तुम्हारे यू कैन एक्सेस इट थ्रू योर बैंकिंग ऐप, उसमें आ जाएगा. तो देन इट विल बी वियर्ड. प्राइवेट हाँ. की पब्लिक की का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा. उनका देखेंगे, उनका स्टेबल कॉइन्स में क्या है यूएक्स, है ना. Yeah. Moving ahead, this is something which happened yesterday, देर रात को, and there was a report from Morgan Stanley. क्या है इनका, what is it called? Global Investment Committee. So they've put out a statement and a report September 30th को issue किया है. उसमें उन्होंने बोला कि we aim to support our financial advisors and clients who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multi-asset portfolios. And इसमें up to 4% तक का बोला है कि it is a sound advice. And ये GIC जो है मॉर्गन स्टैनली की, इनके पास 16,000 एडवाइजर्स हैं मैनेजिंग क्लोज टू $2 trillion in savings and wealth. So this is a big deal. एंड ये पहले भी हुआ था, ब्लैक रॉक ने भी बोला था एंड उनकी वो खुफिया रिपोर्ट में एलोकेशन वाज 84% इनटू बिटकॉइन. बट या एवरीवन विल स्लोली डिप देयर टोज. ब्लैक रॉक ने अगेन ब्राजील में भी एक सेमिनार दिया था जहाँ पे उन्होंने बोला था अप टू 5% एलोकेशन इज आइडियल. सो now we are seeing people advocate for 0 to 5%, and dhire dhire when this starts growing, people will slowly pivot from 5 to 10 and then 10 to whatever their comfort levels are. Because this is just not me saying it. People who have been in Bitcoin for long, they know that eventually that chotu percent of 4% or 5% will eat up the rest of the portfolio and become bigger. The pie becomes bigger and the rest of your investments in that portfolio basket will seem very negligible. So we'll see more of this happen eventually. But yeah, these are major signals ke अगर ये ऊपर से आ रहा है, like Morgan Stanley is a top down approach and they're telling their clients and advisors कि चलो आप बोल सकते हो, now you have the freedom to go and pitch it to the clients. ये पहले नहीं था and ये धीरे धीरे आएगा to every other country. It will come to India also eventually. कब आएगा नहीं पता, but yeah, it will. There is one more thing which we keep talking about and it is very important, and ये और it will become more prominent in the next few years, 5 years. Wow. Yesterday I was watching Simon Dixon का YouTube interview with Archie and Yeah, मैंने how I was it? think कैसा था?
मुझे टाइम नहीं बहुत मिला अच्छा अभी था। देखने को। या सो ही बेसिकली समरी। टेल्स के इन सब चीज़ों का रोल कैसा है, ऑल दीज कॉरपोरेशंस, ऑल दीज ब्लैक रॉक्स जो आ रहे हैं, दे आर एसेट्स ऑफ एनी कंट्री। तो ब्लैक रॉक इज एन एसेट एंड उनका मेजर लाइक उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है ऑन द यूरोपियन मार्केट, ऑन द यूके मार्केट्स। सो बेसिकली एट दिस पॉइंट अगर वो चाहें तो दे कैन बहुत उथल पुथल कर सकते हैं इन द यूरोप एंड यूके सेगमेंट्स इफ दे वांट, take out the money, वो अपना अलादीन प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, they can do a lot of things. But again, this might sound all conspiracy theorist, but whatever he's been saying has come true, and he's a person who actually follows the money. So wo initial first part of the interview was that, and second part of the interview was when he started. He was one of the OGs, मुझे पता भी नहीं था. He started in 2010 2011 हाँ, मैंने when वो बताया Bitcoin. था, पता है, दो Yeah, दो हफ्ते पहले बताया था। मैं अभी बस 1 महीने पहले उसको सुनना शुरू किया। yeah, मस्त। yeah. He's, सही बोलता है। So he spent 1,000 Bitcoin for his house. तो अभी I think it's in millions, but again he tells कि अभी भी अगर उनको मौका मिले, then he will, you know, जितना उनके पास आज है कल उससे ज़्यादा होना चाहिए Bitcoin. That's his simple हम्म, formula. Every few days it needs to have, he needs to have more, whatever be the price. He's like, हम्म, he will always be buying at the top because आपको हमेशा लगता रहेगा कि Bitcoin is very costly and नहीं खरीदना चाहिए. हम्म, But after a few हम्म, days, few months, few years, that costly will become cheap in today's, I mean, that day's term. हम्म, So हम्म, again, it's a 1.5 hour interview. I'm not doing justice to whatever he's saying. उनका बहुत अच्छा हम्म, perspective है. So whoever wants to check it out, please go and watch it. हम्म, I bring that topic because he also mentions that when you have AI tools and when you have productivity which can be very optimized, and तो धीरे धीरे आपका जो भी काम है, all you have to do is use the AI की help से you reduce the workload. And how do you save something like from that जो भी आपको productivity in terms of money मिल रही है, you save that in Bitcoin. And this is catching on. A lot of solo entrepreneurs, influencers are putting out their stories, personal journeys on YouTube, and धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा where you see individuals who are small to mid size business जो भी up to 50 million 100 million कमा रहे हैं, they will put a chunk of their money in Bitcoin and stash it away. And ये होता जाएगा in the next few years. So उनका साइमन का ये कहना है कि the next 5 years are the only years where you have time to actually accumulate Bitcoin जितना भी हो सके. उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा and then it will be another nation state game altogether. इस cycle में we saw corporations getting involved. Next cycle, that is 28-29 तक, obviously there will be nation states. I'm not saying कि उससे पहले नहीं हो सकता, but तब तक तो ज़रूर होगा because it's not very far. It's just 3 years from now. And yeah, that's pretty much it. So focus on your craft, use the help of AI, and बाकी जो भी आपका productivity बचता है, save in Bitcoin is what a lot of influencers, I mean entrepreneurs also are pitching for. हम्म। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने 3 टाइप की मनी बिटकॉइन में आई आई है, आ रही है। सबसे पहले तो इतने 15 साल में, 14-10 साल में इंडिविजुअल्स ने लिए, बिटकॉइन माइन किए, अपनी सेविंग्स डाली और डीसीए करता है। सेकंड जो भी चल रहा है वो कंपनीज एंड कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, वो उससे आई थिंक 100 या 50-100 टाइम्स बड़ा पूल है। और नेक्स्ट सेकंड में जैसे आप बोल रहे हो कि उससे भी बड़ा पूल आएगा जो गवर्नमेंट का आएगा, वो बस हाइपर इन्फ्लेट करके करेंसी प्रिंट करेंगे और वो उससे भी 100 टाइम्स बड़ा कैपिटल पूल है। वो जो करंट जो वर्ल्ड वर्ल्ड डॉलर डिनोमिनेटेड वेल्थ है 1000 ट्रिलियन, वो उनको शायद 10,000 ट्रिलियन पहुंचा देंगे बिटकॉइन लेने के लिए। इन्फ्लेशन मनी प्रिंट कर करके, डाइल्यूट कर करके बिटकॉइन लेंगे। सो 10,000 ट्रिलियन से ज़्यादा भी पहुंचा सकते हैं। फिर उसमें है कि यार बिटकॉइन, इवेंचुअली बिटकॉइन विल ईट एवरीथिंग। True. चलिए आगे बढ़ते हैं. या वन मोर एग्जांपल इज पावेल डुरोव जो सीईओ एंड फाउंडर हैं ऑफ टेलीग्राम, द चैट एप्लीकेशन. इन्होंने भी अपना 2013 में आई थिंक ही स्टार्टेड हिज जर्नी, एंड इनका साफ बोलना है कि ही डजंट ओन रियल एस्टेट, ही डजंट ओन एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग.
all of his money, at least 99%, 90% and above, is in Bitcoin. एंड इनके ये अगर आप देखोगे क्लिप तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इनके फ्रेंड्स ने इनके आसपास जो भी थे उन्होंने साफ मजाक उड़ाया था कि व्हाट इज दिस, लाइक क्या कर रहे हो, यू लूज ऑल ऑफ योर मनी इन बिटकॉइन. एंड इवेंचुअली all of his lifestyle was funded through Bitcoin investments, which he's been doing since 2013. So again, entrepreneurs, whoever is watching, whoever will watch, maybe whenever, so it is imperative for you to learn on how to save the wealth that you're generating through your businesses, through your income, and save some of it in Bitcoin. उससे क्या होगा आप खुद देख सकते हो. You have been seeing the past result of 5 years, 10 years is the proof. So yeah, that's the rant and pitch for what entrepreneurs are doing. Coming to the last few news, international news है 3-4, and this is something. HODL is a recent treasury company. I don't know if treasury channel में cover कर रहे हैं. आपने किया क्या cover? I didn't see. हाँ lightning वाला किया था. They deployed in lightning, वो किया था. So basically these guys are based out of UK, and इन्होंने launch, so along with HODL, which is the treasury company, they are providing service as well through the lightning liquidity provider. And अभी इन्होंने October 1st को launch किया UK Bitcoin ecosystem grant and funding initiative. So basically they'll focus on education policy, tech development, community, and open source जो developers हैं, educators, activists हैं, उनको support करेंगे through this grant. This is a great initiative. Ideally every treasury company should be doing it, and they will do it eventually. बट अपने अपने तरीके से करेंगे. अब स्ट्रैटेजी का अगर आप देख लोगे, देयर मेन फोकस इज ऑन अक्यूमुलेटिंग एज मच बिटकॉइन एज पॉसिबल. बट उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे उन्होंने स्ट्रैटेजी हब बनाया है, एंड दे होस्ट ईयरली, क्वार्टरली कॉन्फ्रेंसेस along with other people. So everyone's trying to do their own part in some form or the other. JetKing का ही देख लो, अगर JetKing has partnered with Plan B. Plan B is a global Bitcoin education initiative as well. तो सब लोग अपने कैपेसिटी में जैसा हो सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू एजुकेट द वर्ल्ड ऑन बिटकॉइन, एंड धीरे धीरे होगा ये. इट विल जस्ट रैंप अप ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स जब नीड पड़ेगी इसकी. नाइस. कमिंग टू स्वीडन, यहाँ पे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई मीन सेमिनार हुआ था इन पार्लियामेंट, स्वीडिश पार्लियामेंट में. एंड डेनिस जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के. इन्होंने प्रॉपरली ओपनली पिच किया है फॉर अ बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, एंड ही हैज़ फाइल्ड, आई मीन बिल भी इन्होंने फाइल कर दिया है अलॉन्ग विथ अनदर कलीग ऑफ हिज. तो दिस इज़ अनदर कंट्री प्रिपेयरिंग टू एक्सप्लोर द बिटकॉइन स्टैंडर्ड एंड कैसे होता है. तो धीरे धीरे होगा. स्वीडन में अगर आप देखोगे तो H100 इज़ द ओनली कंपनी, Bitcoin treasury company. I think और एक है, but it's very small scale as of now. But yeah, things are picking up pace वहाँ पे भी. So the whole Jan3 team, along with various individual, जो ब्रायन जो है, इनका what's the problem करके एक वीडियो था. So that also is a very good explainer, a 20-minute explainer on why Bitcoin is needed. So yeah, that is happening in Sweden. Seth Mojo is there, ना? Seth Mojo है वही है ना? हाँ Seth Mojo, yeah, nice video था. What's the problem? So almost last but not the least, Abu Dhabi bans cryptocurrency mining in farms. So basically Abu Dhabi, Dubai, and a lot of other Emirates in UAE have a lot of subsidies from the government in terms of irrigation, and जिनके भी farms थे पहले, they used to get a lot of free electricity. तो वहाँ पे the government has told कि जो भी violate करता है, they'll have 100,000 dirhams fine, and जो भी होगा further legal action, their equipment seize किया जाएगा वगैरह वगैरह. So we'll see a lot of this happening in the near future as well, where governments and corporations will be the sole in charge, or they will handle the Bitcoin mining. Baki normal public will not be able to do it unless you are running a BitAxe वगैरह वगैरह, which is very tiny. So
This is something which will develop in other countries also. तो सब लोग इसको as an example देखेंगे and eventually they'll also adopt it for their own countries. There's no good or bad here. It's just it was meant to be, because no private player will be involved in handling energy. They eventually come up and the state will control the energy production and distribution. So yeah, देखते हैं कि whenever Bitcoin mining happens in India, कैसे it plays out. एंड यही करते हैं राइट, लाइक गवर्नमेंट एंड जो भी पावर में लोग हैं, दे ट्राई टू कंट्रोल एनर्जी फर्स्ट, एंड बाय कंट्रोलिंग एनर्जी फिर वो मनी है, वो एनर्जी का ही एक दूसरा फॉर्म है, वन टाइप ऑफ एनर्जी, उनको कंट्रोल करता है। द नैरेटिव इज आल्सो वन टाइप ऑफ पावर, सोशल Yep. मीडिया उसको कंट्रोल करता है, बट जो एनर्जी सोर्सेज है वहां से मेन आता है। निकोला टेस्ला की भी काफी कंस्पिरेसी है, अगर आप कोई देखना चाहो तो। निकोला टेस्ला ने भी काफी चीप एनर्जी रिसोर्सेज फाइंड कर लिए थे, एंड सडनली उसको उसके प्रोजेक्ट सारे डिफंड कर दिए गए वो जेपी वायरलेस मॉर्गन ने। इलेक्ट्रिसिटी करने वाले थे ना? हाँ, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी था, एंड काफी चीप इलेक्ट्रिसिटी था यूजिंग मैग्नेटिक्स, Okay. मैग्नेट्स। Okay. एंड जब वो न्यूयॉर्क में 33rd फ्लोर पे जब उनका डेथ हुई, तो वो जो Hmm. पेपर्स जो थे ना, वो हैंड ओवर किए गए डोनाल्ड ट्रम्प के सगे चाचा को। वो एफबीआई के Hmm. डायरेक्टर थे उस टाइम पे, Of एफबीआई के course. डायरेक्टर थे 1940 50 40s में, 40s में। सो Yeah. वो भी काफी कुछ है, दैट इज आल्सो बिग रैबिट होल। बट हाँ, वो एनर्जी कंट्रोल, मेन थिंग इज एनर्जी कंट्रोल, फ्री एनर्जी। तो अब ये कि अब यहाँ बिटकॉइन में माइनिंग में हमें इंसेंटिव मिल गया, लाइक हम वी कैन डायरेक्टली मोनेटाइज इट। तो अब कितना रोक पाएंगे वो देखना है, क्योंकि Hmm. बिटकॉइन माइनर्स है, उनको अगर ये सब जब व्हेन दे गो इनटू दिस रैबिट होल, टेस्ला, Yeah. फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो अब हाउ विल इट प्ले आउट, वो देखना मजा आएगा। लाइक Right. विल दे बी एबल टू अडॉप्ट दिस इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस, से स्टेट कितना उनको परेशान करेगी, एंड वो कर भी पाएगी क्या? Because now these miners and now these people, they have Bitcoin, they are financially sovereign, little bit sovereign than the fiat world. Yeah. So मैं उसके लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो फ्री रिसोर्सेज की जो कंस्पिरेसी जो भी है, तो पता चलेगा, Hmm. लाइक आफ्टर बिटकॉइन इट वोंट बी, जो भी है बाहर आएगा, सच Correct. गलत पता चल जाएगा, समथिंग लग गया। Yeah, that was pretty much it for this week. ईरान के जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 4-0 स्ट्राइक ऑफ कर दे. दैट इज हाँ समथिंग यार, एल्स व्हिच आई मिस्ड. सो अब उनके करेंसी से द लास्ट 4 डिजिट्स आर eliminated, just gone. So every other country will face this eventually, and ये देखने को मिलेगा. ये So कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? लाइक जो चीज 4000 की थी अब वो 4 की आएगी, ऐसा कुछ ना? yeah, so ideally सबको करना चाहिए. इंडिया में जो चीज़ आपको 10 रुपए में मिल जाती थी, now approximately it's costing 100 rupees. So हम्म। mentally, if you are eliminating zeros from the right hand corner, then it makes sense. हर कंट्री और में वो हो रहा है आर्टिकल ये. में, वो आर्टिकल में क्या लिखा है पता है कि ये करने से इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, इट विल बी वेरी मच इजी फॉर डेली सेटलमेंट्स, फॉर Sure. कैलकुलेशंस। लेकिन इसको कितना पॉजिटिव दिखा रहे हैं लोग। तो बस ये वही आते ना, हैं। मतलब वो ज़रूरी है उनको. ऐसा अगर नहीं दिखाएँगे तो पीपल विल हम्म नॉट हम्म हम्म एक्सेप्ट. हम्म हम्म। हाईएस्ट करंट डिनोमिनेशन कितना है पता है आपको ईरान में? एनी आइडिया? ना? ना, ठीक है, लेट मी ठीक है, जस्ट चेक. ठीक है। ट्रिलियंस में ही होगा, मिलियंस बिलियंस में होगा। हाईएस्ट करेंसी डिनोमिनेशन. और जैसे ओह, अभी अपनी आरबीआई की 100,000 100,000 रियाल बैंक रियाल रूल. नोट, 1 लाख की नोट है ना, या उसमें 4 जीरो हटा देंगे तो 10 हो जाएगा वो तो सीधा। या तो अभी डॉक्यूमेंट्री में से, आरबीआई की उनका डॉक्यूमेंट्री में से एक मस्त चीज लाइन, हम मुझे लाइन लगी कि डेप्यूटी गवर्नर बोल रहे हैं कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड, अपना आरबीआई हाँ, डॉक्यूमेंट्री में।
हाँ प्राउडली बोल रहे थे वो, लास्ट टाइम भी बोला था मैंने। सो या ये ठीक है, ये ठीक है। इसको अभी तो इसको और बोलेंगे, अभी रुको, अभी तो हर बार बोलेंगे, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। प्राउडली बोल रहे हैं। क्या आप क्या बोल रहे थे कुछ? मैंने कहा, आपको रोका था। ईरान। एक मिनट हाँ, मतलब। एक मिनट हम्म, 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 So yeah, guys, mostly that was it for today's episode. Happy all time high, happy all time high. नेक्स्ट वीक में फिर से हैप्पी ऑल टाइम हाई करेंगे, नेक्स्ट मंथ में भी करेंगे। व्हेन वी स्टार्टेड बिटकॉइन हब द प्राइस वाज अराउंड 55,000 $60,000. So after starting the Bitcoin hub show, the like price is more than 100% up. So that also feels good. But this is just the beginning. Next 100% में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, gradually then suddenly. Oh, अगर आप नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को शेयर करो। दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर वैल्यू, बिकॉज या जितनों भी आप, मोर पीपल यू शेयर इट विथ, इट्स गुड फॉर देम। थोड़ा सीखेंगे, जानेंगे। हमको यहाँ पे कोई अल्टकॉइन शिटकॉइन वो भी कोई शील नहीं करता। वी ओनली टॉक अबाउट बिटकॉइन, वी ओनली टॉक अबाउट फ्रीडम। ज़्यादा फ्रीडम बोल दिया तो चैनल बंद हो जाता है। हाँ, मेरा अनबॉक्सिंग बिटकॉइन चैनल भी बंद हुआ है। अनबॉक्सिंग या बिटकॉइन चैनल उसके बंद बारे में हुआ है, थोड़ा बैन हुआ है बताइएगा। मेरा। या सो अनबॉक्सिंग बिटकॉइन चैनल बैन हुआ और उसके 12 घंटे बाद ही बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है। सो जब वो बैन हुआ, यूट्यूब में मुझे मैसेज आया कि आपका चैनल डाउन कर लिया गया, तभी मैं समझ में आ गया था कि भाई अब तो ऑल टाइम हाई आने वाला है। सेम लास्ट ईयर हुआ था नवंबर में, एक दूसरा चैनल था मेरा, उसमें मैंने बाद 2020 में एक वीडियो बनाया था मैंने कि बिटकॉइन विल गो टू 1 मिलियन विद इन 5 ईयर्स। 2020 में बनाया था, और वो उन्होंने चैनल 2024 में बंद किया था, जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था 73,000। सो अभी भी ऐसा ही हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 2 चैनल बंद हुआ, एंड उसके 24 आवर्स में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। सो आई डोंट नो हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स, बट देयर आर सम कोरिलेशन। तो अगर आप लोग ब्रेकआउट नेक्स्ट पहचानना चाहते हो तो कोई बिटकॉइन की वीडियो चैनल बनाओ, एंड उसमें प्राइस, मनी प्रिंटिंग, इन्फ्लेशन की बातें करो, एंड नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा तो आपको आपका चैनल बंद हो जाएगा। मेरी चैनल बंद करके क्या मिल रहा है उनको यार? पता नहीं क्या है यार। आई मीन फॉर एनीवन हु इज वाचिंग प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि ये चैनल भी कभी भी बंद हो सकता है यस, डिपेंडिंग ऑन यूट्यूब यस, बाबास यस। व्हाटएवर। सो नोस्टर सो में आप बिटकॉइन हब का पता नहीं अकाउंट है कि नहीं, पर हमें फॉलो कर लो। जब भी होता है, विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन नोस्टर, है ना? सो एंड आई गेस वी विल बिल्ड ऑडियंस फास्टर देयर, इसके कंपेयर या में तो। Yeah. तभी लिखा है ऊपर बिटकॉइन नोस्टर, आपको दिख ही रहा होगा सबको। या ठीक है। ठीक है, चलिए। जिसको भी आई यस, मीन yes, please stream on Nostr. Sachin to always advocating for Nostr. Yeah, विल डू yeah, इट। we had done it in the past, but then again we faced roadblocks zap stream के चलते। I don't know why. चैनल ब्लॉक We'll करवा दो, हम figure कर it लेंगे। out. Yeah, pivot होगा तब या, proper. या, चलिए राहुल, thank you for tuning in. Sachin, as always, thank या, you. थैंक यू भाई, Yeah, एंड हैप्पी it's ऑल been a टाइम while. हाई। सचिन को भी बुलाना पड़ेगा। प्राइमल पे है Primal ना, हम कर सकते हैं, मैंने ट्राई किया था, प्राइमल पे but डायरेक्ट is कर it only सकते हैं। for phone? phone पे है क्या? हाँ, क्या नहीं, desktop पे? वेब भी हो गया, वेब भी है। Oh, सो okay, मैं देखता हूँ, प्रिपेयर हो cool. जाते हैं। यूट्यूब तो Yeah, बंद ही कर देंगे फिर बाद में रोस्टर हो गया तो। टाटा yeah, बाय बाय, है ना? yeah. देखते हैं। but yeah, we'll सब्सक्राइबर yes, Sachin। काउंट इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग हम्म, इज ये जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हम व्हाट वी लाइक टू डू, इट नीड्स टू बी आउट इन द ओपन। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। एंड या बाकी देख लेंगे कैसे होता या, है प्रोग्रेसेस। अनबॉक्सिंग का भी आप स्टार्ट करना उस पे, प्राइमल पे। या देखते हैं। वैसे वो भी ऐसे ही था तो। या ठीक है, चलिए। ठीक है थैंक्स गाइस, गाइस थैंक अगेन। यू एवरीवन फॉर सी यू ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक। यस, यस। ये चलो देखो, bye. हैप्पी ओहो ऑल टाइम हाई।
AP all time high, guys. AP all time high. AP all time high. AP all time high. AP all ये time सही high. था. ठीक है. As always, God bless Bitcoin and God bless Happy God. all time high. ये तो मस्त चल रहा है भाई. चलिए, bye bye. सही है guys. Bye bye guys. Number one thing you can do is educate the world on Bitcoin and let people know they need to figure out Bitcoin. And every one of you does make a difference, because I would never get those meetings if it wasn't like someone that went and said, you got to pay attention. And my last point to you, you do not sell your Bitcoin. Thank you. Thank you.